तो चलिए समझते हैं कि आज के वीडियो में क्या नया है आपके लिए। तो यस, आपको पता ही है कि सीरीज की तरह मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है। और अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो रिस्क के बारे में बात कर रहा हूँ। तो किस प्रकार का रिस्क है एक रिटेल स्टोर को मैनेज करते समय, करेक्ट? उनको ही समझ रहे हैं हम। So this is what I have started a series of video related to the risk, which is part of our retail business management. And remember, these risks are nothing but related to very much positive kind of things, and which gives you the opportunity also, which will make a lot of good business for your own future. So what is risk? Already I've explained, so no talk on this. How to control risk. So find out the risk, analyze the risk, evaluate or rank the risk, threat the risk, treat the risk, monitor and review the risk. Then chapter number one already over. It has a six topic. Then chapter number two started. So reputational risk already finished. Technology risk, employee related risk, marketing risk, logistical risk, health and safety risk. So this is what was the topic for the last video which I have uploaded. Now today's topic is technology risk. Okay. So point of sale system failure, then data loss or corruptions, cyber security threats. So these are the sub points. So let's understand one by one. What is POS? Technical issue with POS systems such as crashes or hacking. So you have your point of sale, correct? Where you do the billing and all the thing. You have a small computer and you deal with the system sales, everyday transaction you do with the customer, correct? Suppose you don't have a proper backup, or you don't have an antivirus, or you don't have a standard operating procedure for this things, then maybe you can face a problem. Remember this. If suppose you have 100 stores, correct, and the one single software zone is there where data are getting managed, and suddenly what happened? There's some technical error came, maybe virus or anything, correct? Because of that, that POS is not working. Your system is okay, but that particular software is not responding, correct? So that's all the thing you need to take care of that. And uh, suppose if the POS is not working, then what is next? So you should be prepared with that also. Because you cannot lose your customer. You cannot say to customers, sir, my POS is not working. So please, I'll share on WhatsApp later on. But nowadays, what is happening? If you go to any store, any well-managed retail store, they're not giving you the printed bill. They're giving a things on your WhatsApp, right? See how cleverly they are moving. Same way we need to also think, correct? Data loss or corruption of sales data or customer data or inventory data. So this can be avoided fully if your team members are very strong, your SOPs are very strong, you have all the things on the place, and you have a lot of discussion, lot of training, lot of meeting, then only this you can control. Otherwise, you cannot control this also. See, one thing I'll tell you, suppose you have added any process, correct? Once you said to everyone, everybody will not remember the long time. So you have to keep on talking, correct? Nothing else. So that corruption and all the things won't happen. Your sales data will not go here and there. And your customer data also will be secured, and inventory data also will be secured. But you have to communicate to your team, this is wrong, you should not do, you should do this. So these are things how you communicate. Then something will happen, and it will go for the longer time, and that's a good thing, correct? Once you said, people will not see, sometime now people are not knowing this is what is wrong and what is right. We have to tell them, "Ki boss, you can enter customer data in the system because you're a cashier or you're a sales officer, correct? But you cannot take the data in your mail ID or in WhatsApp, or you cannot download
and take a print. This is not allowed. So you have to stop there. Whenever somebody is downloading data, you should get the message. Your boss should get the message somebody has downloaded and all the things. So they will be knowing who's doing what. Correct. So a lot of layering you should do. That's what needed. Then cybersecurity threat, the same thing here. Malware, phishing, or other cyber threats to store system or data. So if your store is very important, very big, you are a bigger brand, and maybe you are a smaller brand or a smaller store, doesn't make sense. You can have a competitor in the market who are not happy with you, and they can create a lot of problem. Right. So you should be very sure. So nowadays, what happened? The technology need a lot of support. Now you cannot say that no, I'll write on a paper and I'll give all the things. So that is a hectic job. Your operational cost will go very much high. Understanding? So whenever you're buying any system, buy a license-oriented thing, buy a antivirus, have a lot of password changing option like every 10 days, every week, or every day. You need to keep on changing these other things. So these things will not come to your desk at all. Very rare it will come until unless someone internally is not involved. Otherwise, it will not come. See, for technology uses, whatever, suppose I'll take one example so you'll understand. Suppose you inside the store you have a different kind of devices. Device number one, which is very dangerous, mobile. So whenever you are inside the store, say do not use mobile and keep it in a locker. But the staff will say, sir, my mama is not well, my father is not well, or something. Vendor call will come. So say let them call on a office mobile. So office mobile will be there at the cash counter, correct? Either anything. Okay. So they will get the call and let them talk. Tell them to tell to cashier you should be very active. If anybody is calling, just inform to us. Correct. Then second device which is very danger is your computer only, your PO system only. Correct. So for that, you should have a recognition who is doing a login. You should have a proper camera, CCTV, who's sitting on that chair. Okay. Because and see in that system you should not allow pen drive, you should not allow USB cable and all the things. Nothing. Only through the system and internet will make sure, and the keyboard and mouse, not more than that. Any extra device you should not allow. Should WhatsApp should not work on that system. So you have to stop lot of things if you want to have a better technology things, helping technology things. Then there are other devices which can create a problem. Like you have maybe lot of sensors, correct? And which gives you the data and all the things. So that sensor SOP, everybody should know when to use, not to use, and all the things. Correct. Then second thing, in your store you should have a proper CCTV. Yes, of course, needed. Whatever the product you are selling. See, if you want to learn more how to use CCTV, you should visit this jewelry shop. Yes, I'm not joking. You should visit this jewelry shop so you'll understand how they are utilizing that closed CCTV. Okay. Yes, you'll get a lot of idea. And apart from that, there are a lot of devices like your music system, correct, can be a part of it because if it's connected to your computer where CCTV is also connected, POS server also is connected, so that can be a loss for you in future. So your PO system should have a separate home. Your music system should have a separate home. Your CCTV should have a separate home. Remember this. And there should not be any connection. Mobile uses should be very less. Only office mobile should work. Correct. As a store manager, yes, of course, you should have a mobile, but you should also avoid. Be a team member only. That is what you can do. Correct. And you should have a training on this. These are the topic time to time, so they will understand. Yes, these are very important. Okay. तो टेक्नोलॉजी रिस्क क्या होता है ये जो आजकल तकनीकी आ रही है मार्केट में ये बहुत बड़ा
अपॉर्चुनिटी तो भी है, उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम भी लेके आ रही है। और आप लोग को भी व्हाट्सएप पे मैसेज मिलता होगा या न्यूज़पेपर में देखते होंगे, टीवी में भी देखते होंगे, बहुत सारा रिस्क है। तो पॉइंट ऑफ सेल, तो जिस डिवाइस से आप सेल्स बिलिंग कर रहे हैं उसमें भी टेक्निकल इशू आ सकता है, जैसे क्रैश हो सकता है, हैक हो सकता है, लेट हो सकता है। अब आपके पास सपोज कीजिए 100 से ज़्यादा स्टोर है, तो 100 से ज़्यादा आपके पीओस भी हो गए, पॉइंट ऑफ सेल भी हो गए। अब उनको मैनेज करने के लिए आपका सर्वर इनफ नहीं है, या किसी ने थ्रेड डाल दिया, या सडनली ओवरलोडेड हो गया, फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका पीओ सिस्टम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से टच है, सडनली वोल्टेज अप डाउन हुआ और आपका पीओस क्रैश हो गया, तो उसके लिए भी ध्यान देना है। फिजिकली डैमेज हो सकता है, तो उसके लिए भी ध्यान देना है। ठीक है। डेटा लॉस और करप्शन, सो लॉस और करप्शन ऑफ सेल्स डेटा, कस्टमर डेटा और इन्वेंट्री डेटा, इन सब बातों पे हमेशा डेली आपको टीम मेंबर से बात करते रहना है कि भैया ये ऐसा होता है, ये ऐसा क्यों, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारे टीम मेंबर को पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या लीगल है क्या इलीगल है। अभी एक चीज मैं बता रहा हूँ, अभी सडनली मैं आपके स्टोर में आऊंगा, बोलूंगा यार मैंने ना लास्ट मंथ एक बिलिंग किया था और मेरा नाम है राम किशोर, जबकि मेरा नाम राम किशोर नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ किसी के बारे में कि वो यहाँ पे प्रेजेंट था कि नहीं या कुछ। अब वो सेल्स पर्सन गया राम किशोर, हाँ सर उन्होंने तो बिलिंग किया था, इतने टाइम में बिल हुआ था। अब वो आप हमसे, अब मैं डुप्लीकेट बिल मांगूंगा तो आप दे देंगे, प्रिंट होके चला गया मैं। ये डेटा ब्रीच हो गया। आपने किसी कस्टमर का इंफॉर्मेशन किसी कस्टमर को दे दिया, बिना कुछ जाने बूझे, बिना कुछ प्रूफ लिए। तो इन सब बातों को आपको बताना है अपने टीम मेंबर को, बिना परमिशन के, बिना एसओपी के आप ये सब काम नहीं करेंगे। ठीक है। याद रखिए, उनको डेटा एंट्री का परमिशन होगा, लेकिन डेटा लेने का परमिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, मालवेयर, फिशिंग और अदर साइबर थ्रेट टू स्टोर सिस्टम और डेटा। अब ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट क्या है? मान लीजिए कि, देखिए ये कैसे होता है आपके स्टोर के अंदर। सबसे डेंजरस डिवाइस है मोबाइल, जिसके थ्रू ये हो सकता है। तो जितने भी स्टाफ है सबको बोले कि आप मोबाइल स्टोर में जब रहेंगे तो आप इस्तेमाल नहीं करें, बोल दीजिए। और एक पर्टिकुलर प्लेस दे दीजिए जहाँ पे मोबाइल रखा हो, और जब लंच टाइम हो या फिर ब्रेकफास्ट का टाइम हो, टी टाइम हो, लू टाइम हो, उस समय वो अपना मोबाइल इस्तेमाल कर, लेकिन स्टोर के बाहर, या तो आपका कुछ तो स्टाफ रूम जैसा होगा, वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा सबसे डेंजरस डिवाइस है आपका खुद पीओ सिस्टम। उसको भी ध्यान रखना है, कौन उसको ऑपरेट कर रहा है, कौन बार बार लॉगिंग कर रहा है, कौन क्या लगे, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा डिवाइस ऐड होने का चांस नहीं होना, जैसे पेन ड्राइव कभी भी ऐड ना हो, व्हाट्सअप कभी वर्क न करे, गूगल कभी भी वर्क न करे, तो आपका पीओ सिस्टम सिक्योर रहेगा। ठीक है। मतलब ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं करना है जो एक्सटर्नल हो, इंटरनल से जाके टच हो जाए। ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा आपका जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते, जैसे आपका म्यूजिक सिस्टम आप रखते हैं, करेक्ट, उसके थ्रू भी आपके ऊपर ये सारे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट आ सकते हैं। अगर वो लिंक है पीओ से, एक ही सिस्टम से ये सारी चीजें लिंक है, तो हो सकता है। फिर आपका सीसीटीवी, वो भी एक पार्ट होता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एसओपी बना देना है इन सब चीजों को। पहला पॉइंट ये अगर मान लीजिए मोबाइल हो, पीओस हो, साइबर आपका म्यूजिक सिस्टम हो, या फिर आपका सीसीटीवी हो, इनके लिए सेपरेट सेपरेट जगह होना चाहिए। ये इंटरकनेक्टेड स्टोर के अंदर नहीं रहेंगे, ये बात याद रखिएगा। आपका सीसीटीवी आपके पीओ से इंटरकनेक्टेड नहीं होना चाहिए, आपका म्यूजिक सिस्टम पीओ से इंटरकनेक्टेड नहीं होना चाहिए, आपका जो वाईफाई सिस्टम वो मोबाइल से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एसओपी बनाना पड़ेगा, और आपको अपने टीम मेंबर को ट्रेंड भी करना पड़ेगा उस तरह से कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, तो आपका डेटा इधर उधर नहीं जाएगा, आप सिक्योर रहेंगे। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड टुडे अबाउट द technology risk. So there are a lot of things you will understand in future also, and this is not the only risk which is related to technology. There are more. You have to go much more deeper. एंड रिमेम्बर, जब भी कुछ नियम बनाते हैं तो वो नियम फ्यूचर में टूटेगा ही टूटेगा। आपको नया नियम बनाने के लिए रेडी रहना चाहिए। हाँ। अब कुछ ऐसा भी नहीं करना है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पे चीजें चली जाए, उनको भी ध्यान देना है।
So this is all about from my side. Make sure whenever you're making a rules, rules are always getting break. Rules are always get new form of the understanding. So be ready to face that, and do not work on a micro level. This is not needed. That will not help you. Just work on a process, work on your concept, company principle, and all the thing, and then you will grow. So thank you. Dhanyavad. If you like my talk, if you like my channel, please subscribe. एंड अगर आपको पसंद आता है मेरे मेरा ज्ञान से आपको फायदा होता है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। याद रखिएगा मेरे चैनल में बहुत सारा एक्स वाई जेड आपको नहीं मिलेगा, बहुत सारी फैशन चीजें नहीं मिलेंगी, बिकॉज इट्स टोटली डिपेंड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो थैंक यू।